Привет! Здравствуйте! My name is Rabit and I am gonna teach you the Russian alphabet today. So let's start. What is an alphabet? Alphabet is the system of symbols, letters that we use for writing and reading. Alphabets, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स को हम रीडिंग और राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं. अल्फ़ाबेट्स को हम साथ में उनको मिक्सअप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेटर्स बच जाते हैं और पूरा सेंटेंस एंड इवन थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ वर्ड वी क्रिएट आउट ऑफ देम. By putting the characters in different order, we get different words. Yes, it is known to all. So we discuss Russian letters. In Russian, there are total 33 letters or alphabets we say, and some of them are like in English, and some of them are totally different, and some of them are like the alphabets in Greek. So let's start. Rule number 1, how do we use the letters? For example, जैसे कि हमारे काफ़ी ज़्यादा जो इंग्लिश के लेटर्स हैं वो भी रशियन अल्फ़ाबेट्स के अंदर यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल ओ लाइक ओ इन इंग्लिश, और क लाइक क इन इंग्लिश, एंड ट लाइक टी इन इंग्लिश. तो इनको हम एक सर्टन ऑर्डर में कंबाइन करेंगे तो के ओ टी, and we get a word kot. Kot means cat in Russian, and it contains also the similar words that are used in English, like o, k, t. We know these words, these are known to us. Then, what is the difference between a letter and a sound? They are not the same thing. We use letters in a written speech. Like जब हम कुछ लिखते हैं तो हम letters का use करते हैं और उनसे हम कहीं ज़्यादा paragraphs और paraphrases type बनाते हैं. And जब हम sound use करते हैं तो हम उससे oral speech के लिए use करते हैं, like to communicate with others. Letter and sound, is it the same thing? No, letters and sounds are named differently. For example, in Russian, the b, bukva means letter, and ba, it is a, b, a, ba, bukva, ba. In letters, it is written ba, and its sound is like b. Zvuk, b. Zvuk is sound, and zvuk, it is in sound, it is b. But in letters, it is ba, and zvuk, it is b. Letter and sound are not the same thing. We can write letters in different ways. Yes, we can write them in different ways. In Russian, printed books में और typing में pieces या smartphone में हम ये वाली जो है ये written text ये वाला text यूज़ करते हैं, but handwriting में ये वाला text हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा कर्सिव में चला जाता है. लाइक आगे ये वाला वर्ड तो सेम एज इट इज़ है, बट जो नेक्स्ट काफ़ी वर्ड्स आएंगे वो जो प्रिंटेड वर्ड्स हैं वो डिफरेंट होंगे और जो सिरिलिक वर्ड्स हैं वो डिफरेंट होंगे. Okay, let's start with the first letter. It is A. Letter means bukva A, and sound which is zvuk A. Bukva A, zvuk A. Like in Adidas, alif madda am. Like in am, aram. Like in Adidas, it is like A. It is in handwriting, it is A. And now we have to practice it. Bukva A. Repeat after me 3 times. A, A, A. And the sound of it is Vuk A. Repeat after me 3 times. A, A, A. Okay, the next one. It is B. The letter one, Ba. Bukva Ba, as we did it previously. Bukva Ba, like the letter and the sound are not the same. Bukva Ba, and the sound zvuk, it is b. Bukva ba, and the sound is b, like b in ball, and b in bold, and b in. There are a lot of words you can use your imagination. Like in the previous that I told you guys that जो a है वो तो same है handwritten में भी, but now look at this b. ये handwritten में जो capital वाला है वो same है, but the smaller one is not same. It is like D with the slant like that. Now practice B 3 times.
Bukwa letter ba. Repeat after me 3 times. Ba, ba, ba. And the sound b. Repeat after me 3 times. B, b, b. The next letter v. It is like English B, like in English it is B, but in Russian it is V. Bukva V, like in the previous one, the letter and sound are not the same, like bukva B, so it is bukva V, letter V, and its sound is V. Zvuk V. In van, in wallflower, or in or certain things, a lot of things like vase, and it is written the same like in English we write B, but it is not B, it's V in Russian. It is the bigger one and the smaller one, these are B in Russian. Now practice, oh sorry, these are V in Russian. Sorry for the mistake. Now practice V 3 times. Bukva V. Repeat 3 times. V, V, V. And zvuk V. Repeat 3 times. V, V, V. The next one is G. It is G, like G in English. Bukva G. Letter G. And zvuk, the sound of it is G, like G in Google, G in garage, or G in grapes. And it in handwritten, the capital one is the same as this printed one, but the smaller one is not the same, it is different from that. Practice G 3 times. Bukva G. Repeat 3 times. G, G, G. And the sound of it G. Repeat 3 times. G, G, G. The next one is D. Bukva De. De, like D in English. Like zvuk D, like D in Adidas, or D se darwaza, or D se dal. And the capital one is same as in English, but the small one is like G, so be careful about this because it is a bit confusing when it is in cursive. Then practice the 3 times. Bukva de. Repeat 3 times. De, and the sound the. 3 times repeat after me. The. The next one, yeah. It is like E, but it is not E. It is yeah. Bukva yeah, and zvuk E plus a. Yeah. Like yeah, we did it. Yes, and yellow. Zero. Xerox. Like yes, Xerox. Like in yeah, Xerox. Yeah, Xerox. It is same like the handwritten E in English, but it is yeah. Remember, it is yeah. Practice yeah 3 times. Bukva yeah, yeah. Then zvuk sound yeah. Repeat 3 times. Yeah. Then the next letter is yo. It is the same as yeah, but we put 2 dots over it, so it becomes yo. Bukva yo, and zvuk e plus o. Yo. Like in yoga, in yogurt, or in your, like it is the same like that. And in handwritten it is also the same, but these 2 dots differ it from this one. You got it? Then practice yo 3 times. Bukva yo. Then the sound of it yo. Repeat 3 times. Yo. Then the next one is j. जब एक बी आपके कान में ज वाइब्रेशन करते हैं या आपके फ़ोन की वाइब्रेशन होती है तो इट साउंड्स द सेम एज लाइक दिस ज. बुकवा ज, और जैसे कि य जालाबारी में उर्दू में,
and zvuk j, like in treasure, measure, pleasure, like it is j. एंड इन हैंड राइटिंग एक सीधा सी एक उल्टा सी और उसके दरमियान में we will connect them with this line, with this sort of line. This is same the capital and small. Then the next one is z, like 3. Bukwa z and zvuk z, like in zoo, zebra, and there are a whole lot of words with this, like zoom, yes. E. The next one is E, like double E or I, it becomes E. Bukwa E and zvuk E. The letter is same as the sound. Bukwa E, zvuk E, like in Intel. Engineer, engineer, like it is sounded like that. And in handwriting it is a bit difficult to remember. It is like U of English. The next one is bukwa ui, ikrat kai, ikrat kai, ikrat kai, zvuk ui, like in New York, ui. In most cases it comes at the end of the sounds and it is like you will remember from this curve, like ui. You will have to produce a little bit curve in your tongue, ui, to pronounce it, ui. It is the same as the previous one, E, but it has in handwritten and also printed, it has this curve on it. The next one is bukwa ka, the same that is in English, k, zvuk k, like in Coca-Cola or cat or camel or caramel. The next one is l, bukwa L and zvuk l, like Land Rover, Land Cruiser, lounge and lamp. It is a bit hard. L, L. In handwritten it is like a wave. Use your imagination. The next one is bukwa M. It is like the same of English, M, and zvuk M, like in mouse or mango or march. And it looks like when जब हम थोड़ा सा स्टाइलिश करके एम को लिखते हैं उसमें जॉइनिंग राइटिंग ऑफ इंग्लिश में, तो ये कुछ ऐसा ही लगता है. यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है और एज़ कम्पेयर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है. सो इसको पहचानने का यही तरीका है कि यहाँ पे इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और इस एरिया में इसका थोड़ा सा मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है. जब ये जॉइनिंग में लिखा होगा तो इस ट्रिक से आपको पता चलेगा आसान कि ये एम है या एल है, क्योंकि ये देखें एल और एम अगर इकट्ठे लिखे हों तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन कौन सा वाला है. द नेक्स्ट वन इज एन, bukwa N or zvuk N, like in Nike, nut or nail, and it is not H of English, it is N, N or N, its sound is N. The next one is bukwa O and zvuk O, these sounds are same, handwritten it is also the same, O. The next one is bukwa P, P like P, and zvuk P, like in puma or parrot or paper, P. And in handwritten it's like pi, and in smaller one version of it, the smaller version of it is like N. The next one is not P, it is bukwa R, R, like इसके थोड़ा सा प्रेशर अगर आप इसके ऊपर लगाएं तो r, like roar, roar, and zvuk r, like in red or roar.
और दौड़ र, r. The next one is bukwa S or zvuk S, like S star or space. The next one is T, like Urdu wala T, तरबूज wala T, bukwa T or zvuk T, like in Twitter, but it is not T, it is T. And it is like in handwritten, the smaller version is like M and the capital one is like two pillars. And और अगर आप ये भी हम कह लें कि पाए के अंदर एक लाइन हमने लगा दी उसको सेपरेट करने के लिए, so this can also work out. The next one is U, bukwa U, zvuk U, like in zoo or balloon or flu, U, like double O वाली sound जो होती है वो U. The next one is F, bukwa F or zvuk F, like in fire or flame or fridge. Girls, handwritten में अगर आपने आपके earrings के पीछे बिल्कुल सेम ऐसे का stopper होता है कभी कभी, if you remember, it's just like you use your imagination and there are a whole lot of things around you which you can resemble them with. The next one is, it is not X, it is bukwa kha, kh, like kh in kharboos and kh in khargosh. Zvuk kh, like it is not this much appropriate example like hot dog, but in Urdu ye zyada easy है, like kh khargosh and kh kharboos. It is like X but it's not X, it is kh. The next one is bukwa se, t plus s, s, zvuk s, like t plus c और इसको थोड़ा सॉफ्ट करके प्रोनाउंस करें स, like cats के एंड पे जो स आता है और ants के एंड पे जो स आता है, ये it is like this स. And in handwritten it is like the e which we उल्टा वाला n जो हमने सीखा है, बट उसके अंदर ये एक डिफरेंस है कि इसके नीचे एक छोटी सी आउटग्रोथ बनी हुई है जो इसका ये वाला स है, इसको हैंड रिटन में ये हमने बनाया हुआ है लाइक स्मॉल जी एक्चुअली, और लाइक हमने वाई वाला जो इसका एंड वाला स्लैंड है वो हमने लगा दिया. द नेक्स्ट वन इज बुकवा चा, लाइक इन चर्च और चीज, एंड zvuk च, च इज इक्वल टू टी प्लस श, च, च, लाइक च चरवाहा. हैंड रिटन में इट इज़ लाइक वाई, बट वाई का जो हमने इधर को स्लैंड लेके जाना था हम बाहर को ले आए हैं. एंड द सेम इन हैंड रिटन, बट दिस कर्व, दिस वन इज नॉट अ बिट कर्व्ड. द नेक्स्ट वन इज शा, बुकवा शा, एंड इट्स साउंड इज श, लाइक शेल और shepherd और shore or sheep, like sh, and it is like W in English in handwritten. Then the next one is sh. If we write sh like S and H, and this one sh like SH plus SH. श, श. अगर हम इसके स्टार्ट में छोटा सा टी पुट कर लें और उसकी सॉफ्ट सी साउंड दें तो वी विल प्रोनाउंस इट मोर अप्रोप्रिएटली लाइक श, श, बुकवा शा और zvuk श, श, लाइक छोटा सा टी बल हमने बहुत थोड़ा सा उसे प्रोनाउंस करना है. एंड इट इज़ लाइक इसके बाहर भी जैसे हमने लाइक W के साथ हमने ये आउटग्रोथ बनाई हुई है लाइक दिस सेम, इसके बाहर भी ये थी और इसके साथ भी है. The next one is letter hard sign thvordiznak. It is not pronounced. ये एक सेपरेशन फंक्शन परफॉर्म करता है वर्ड्स के दरमियान. लाइक अगर हम एक वर्ड है उसके साथ हम इसको लगा दे तो हम उसे हार्डली प्रोनाउंस करेंगे लाइक सियोत, लाइक हम
इस वर्ड को तब यूज करते हैं जब हमने किसी वर्ड को हार्ड प्रोनाउंस करना हो। लाइक अगर हम सी के साथ लगाएंगे तो हम उसकी पूरी साउंड देनी पड़ेगी, लाइक हमें उसे पूरा का पूरा हार्डली प्रोनाउंस करना पड़ेगा। लाइक अगर हम एल के एंड पे से लगाएंगे तो हमें ऐसे एल पढ़ना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन इज बुकवा उई, वूक उई, लाइक वो गई, वो गई, गई, वो आई, उई, लाइक use your imagination just like I used it. This ship wala will not work that much. The in handwritten and in Cyrillic it is the same. Then the next one is bukwa soft sign, myakke znak. Soft means myakke and znak means sign, sign. It is not pronounced. अगर हम किसी वर्ड के साथ ये लगा दे तो उसको हम सॉफ्टली प्रोनाउंस करेंगे। उसके साथ अगर हम हार्ड कॉन्सोनेंट से जैसे प है तो हम उसके साथ लगाएंगे तो थ बन जाएगा, और थ है तो हम उसके साथ लगाएंगे थ बन जाएगा। एंड इट कैन परफॉर्म अ सेपरेशन फंक्शन एज वेल, जैसे प्या है, प या प्या है ये वाला वर्ड, और अगर हम ये सॉफ्ट साइन प के साथ लगाएंगे तो फ्या बन जाएगा, फ्या, लाइक थ थ थ और फ, फ्या, प्या, फ्या। The next one is a. Bukwa a or zvuk a, like in apple, or eta means this is in Russian and it also starts with a. Like it is like e, like when e is pronounced like elephant. The next one is u. Bukwa u. Zvuk e plus u. U, like y-o-w, YouTube, or y-o-w वाला u जो है that is this. u, o के साथ हमने h को काट के लगा दिया, it is u. The last one is ya. Bukwa ya. Ya, y-a, ya. Zvuk e plus a. E, ya, like in Yahoo or Yandex, or a lot of words are like this. The ya in handwritten and in printed are the same. Okay, now let's check up a short answer question session. The Russian alphabet consists of sounds, true or false? It is false. How many symbols are in the Russian alphabet? These are 33. We name letter and sound b in the same way or not? No. In the letter we pronounce it ba, and in sound it is b. And did you enjoy the lesson? Paka.